Yes, mostly. हर प्रोजेक्ट नया है. शायद मैंने कहा ना मैं बह जाती हूँ. When your emotions are going into something, वो चीज़ हिट होनी ही है. प्लेटफॉर्म पे बोल रही थी जोर जोर से कि इस मॉडल को हटाओ. I try to be the calmest. Please welcome Rachna Sikka. Let's start with your journey. Okay, so my journey in one word I would say has been satisfying, and I've loved each moment of it. I've had my highs and lows. बहुत उतार चढ़ाव देखा है मैंने, but consistently चलती गई मैं रुकी नहीं. Let's talk about from the beginning, the moment you started, those era. मैं सबसे पहले कोऑर्डिनेटर बनी. वहाँ पे मेरी जर्नी शुरू हुई. एक और मेरी कॉलीग थी वहाँ पे, विनीता. उसके साथ मेरी पार्टनरशिप हुई. विनीता सहगल. विनीता सहगल. हाँ, I know her. एंड देन वी जॉइंड इन एज पार्टनर्स एंड हमने अपना ऑफिस खोला रिसोर्सेज अनलिमिटेड. और वहाँ पे हम करते थे कोऑर्डिनेशन और आपका शूट का सारा मतलब बैक एंड काम सारा जितना भी आप फैशन इंडस्ट्री से आप सोच सकते हो वो सब करते थे. वहाँ से हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी शुरू हुई बैक स्टेज मैनेजमेंट की. फिर हमने बैक स्टेज करना शुरू किया, पूरा कोऑर्डिनेशन देखना शुरू किया. और उसके बाद एक पॉइंट आया जब एक कोरियोग्राफर चाहिए था और वहाँ पे कोई नहीं था, तो आई वाज एनकरेज कि तू कर ले करके. एंड दैट्स हाउ माय फर्स्ट शो हैपेंड. इट वाज इन जनकपुरी क्लब. आप मानोगे नहीं, इट वाज अ स्मॉल शो. एंड मुझे बस ऐसे ही बोल दिया कि आप करो ये शो, आप कर लोगे. एंड आई गॉट इनटू दैट शो एंड आई choreographed that show, and it turned out very well. And that was the day overnight my life changed from a backstage manager, a coordinator, to a choreographer. It's a drastic journey. I mean, just one night, one show. Yeah, it was like a one night turnover, and I can't tell you that destiny has actually kept pushing me towards, you know, मैं शायद पहचान नहीं पाती, but मेरे को खुद ही push मिलता गया कि तेरे को ये बनना है, तेरे को ये बनना है. Because मैं एक फैशन डिज़ाइन स्टूडेंट हूँ पर्ल अकेडमी ऑफ फैशन से. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं सोचती थी कि मैं फैशन डिज़ाइनर बनूँ. बट धीरे धीरे करके जब मैं इंडस्ट्री में आने लगी, फैशन इंडस्ट्री सो वास्ट, इसमें इतने एवेन्यूज़ हैं कि मतलब आपको पता नहीं होता आप शुरू कहाँ से करते हो और आप बन के क्या निकलते हो एंड में. एंड फिर भी आपके पास बहुत ऑप्शंस होती हैं. Right, so from the coordination, fashion student, then backstage, finally show direction. Yes. अच्छा, तो कोई ये शो डायरेक्टर बनने का कोई थॉट नहीं था? I mean, it's just suddenly. फैशन डिज़ाइनर बनने का थॉट पूरा कंफर्म था. बट जब मैं निकली एंड देन यू नो मेरे को ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती गई. एंड दैट टाइम यू आर वेरी यंग, आप एक्सप्लोर करना चाहते हो. एंड फैशन इंडस्ट्री एक यंगस्टर के लिए ऐसा है कि वाओ, यू नो मैं जाऊंगी, मैं शोज़ देखूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी. बट उसके बाद आप कहाँ इसमें दिस इंडस्ट्री हैज़ समथिंग अबाउट इट. ये आपको ले चलती है साथ अपने, एंड इट पुट्स यू इन योर प्लेस. किसी ने नहीं बोला कि मॉडलिंग भी करनी चाहिए आपको? करी थी वो भी. ओके. थोड़े टाइम के लिए करी थी. एज इन आई डिड अ कपल ऑफ शूट्स बिकॉज आई बिकेम अ पार्ट ऑफ अ कॉन्टेस्ट. जैसे Miss India kind of, okay. Some Miss India kind of contest, and it was a televised contest. And वो करके, and when I saw that the kind of hard work even the models put in, I was like मैं ये नहीं कर सकती हूँ. तभी मेरे को कैमरे के आगे आने में शायद I didn't prefer. I wanted to be behind the scenes. So I mean, according to you, like somebody who's on front of camera, they work hard. Very hard. I feel there is no front stage without backstage, but I also feel that front stage पे जो आपकी ड्रीम या आपका विजन पोर्ट्रे कर रहे हैं, उनके बगैर भी आप कुछ नहीं हो. Absolutely. So I feel that it goes hand in hand. किसी का कम ज़्यादा नहीं है. So I truly सबका believe equal है? एकदम equal. So what motivates you for this show direction thing? It's my passion towards it. It's the newness of every project. हर project नया है. मतलब इट्स नॉट लाइक जैसे हम कोई जॉब करते हैं तो हमें रोज़ एक चीज़ करनी है जाके. मेरा पैशन इसमें इसलिए बना क्योंकि आई एम अ पीपल्स पर्सन. मुझे लोग बहुत पसंद हैं. आई लाइक टू टॉक टू देम, आई लाइक टू लिसन टू देम. तो इसलिए जब मैं रोज़ उठती थी और मुझे पता था मैं एक शो करने जा रही हूँ, मुझे पता था मैं कुछ नया सुनने जा रही हूँ, मैं कुछ नया देखने जा रही हूँ, नया करने जा रही हूँ. तो वो सोच मुझे इट ऑलवेज केप्ट मी गोइंग.
And every show became a memory for me. Every show became like a dream come true for me. फैंटास्टिक. तो ये जो आपका पहला शो था ये कब था? 2000. अच्छा, बहुत लोग बोलते हैं, खुद हमको भी लगता है कि ये जो 2000 वाला एरा था और जो आज का टाइम है इसमें बहुत गैप है. बट गैप इज़ लाइक टेक्नोलॉजी वन थिंग, बट लोगों का एक माइंडसेट ये भी है कि वो जो टाइम था फैशन का बहुत अच्छा टाइम था. ऐसा क्यों है? आई कम्प्लीटली अग्री विद दिस स्टेटमेंट. उस वक्त ना, जैसे मैं पैशन की बात करती हूँ, मैं तो अटक गई हूँ उसमें और मैं तब से अब तक उसी पैशन में ही चल रही हूँ. बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे इंडस्ट्री में नए नए लोग आते हैं, दे आर द न्यू जनरेशंस, दे आर कमिंग विद ऑल दीज टेक्नोलॉजीज एंड थिंग्स लाइक दैट. पैशन कम हो गया है. आई वुड फील इन द सेंस कि सब ऐसे चल रहे हैं, बस काम करना है. आई मीन विदाउट सोल. या विदाउट सोल, आई वुड से दैट्स द राइट वर्ड. आई मीन देयर इज नो सोल, देयर इज नो पैशन. इट्स जस्ट दैट आओ काम करो चलो. मतलब मैं अगर उस वक्त के अपने मॉडल ग्रुप की भी बात करूं और अब के मॉडल ग्रुप की बात करूं, बहुत फर्क है. सो क्या करते आप अगर आप शो डायरेक्टर नहीं होते तो? मैं एक फैशन स्टाइलिस्ट या फैशन डिज़ाइनर होती. ओके. फैशन में ही होती? फैशन में ही होती. ये तो मुझे शायद शुरू से ही पता था कि मैं जाऊंगी तो इसी फील्ड में, बिकॉज आई वाज फुल्ली इन ऑफ दिस इंडस्ट्री. बचपन से ही मुझे हमेशा था. आई वाज अ डांसर in school and college, and I couldn't take it forward because at that point of time I still believe, not that my parents stopped me, but एक था dancer बनना है तुझे. They would say that कोई और profession नहीं सूझ रहा तेरे को, but they didn't stop me. I learnt my lessons, I did my bit. और आपने सब कर लिया? सब कर लिया. सब कर लिया और सब कुछ यहाँ लैंड हो गई. ओके. सो अपना एक कुछ वर्स्ट एक्सपीरियंस शेयर करिए. The worst experiences, I would only say it is about management sometimes. कभी अगर हुआ हो तो, but वो भी एक memory है, because we had gone for a show, so we had gone to Nainital for a show, and we reached late at night, and हम जब घुसते हैं कि हमें कहाँ रहना है, वो एक dormitory जैसी जगह थी. तो मैं और मतलब मेरे मॉडल्स और सब हमारे तो पहले तो देख के, एंड इट लुक्ड हॉन्टेड. तो हम लोग तो इतना घबरा गए, डर गए, बट बिकॉज अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, वो टीम ऐसी होती थी कि नहीं करना है चाहे जैसे भी हो. वी हैड सच अ ब्लास्ट दैट नाइट इन दैट वन प्लेस, लिविंग ऑल टुगेदर. वी टर्न्ड इट इनटू समथिंग एल्स. मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट और शो? माय मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट became the Nikhil and Shantanu show, which I did in Lithuania, and it was for the embassy. And after the show, we'd got a standing ovation. Oh wow! Embassy mein. And that was one moment of my life, which was, which actually brought tears in my eyes, because ऐसे पहले हुआ नहीं कभी. पहली बात. दूसरी बात, बहुत बड़े बड़े लोग बैठे थे वो शो देखने के लिए, और वो सब खड़े हुए थे. And I want to really thank the designer, and again Tanya, Appu and Anisha, actually Appu and Anisha, that they had actually sent me for that show. Okay. And nice. That became a memory for me, because that place, Lithuania, was so beautiful. It's a small country, इतनी सुंदर जगह है. निखिल शांतनु की वो collection इतनी beautiful थी, and the show turned out so well. And we had all foreign models. It was an experience to train them, because उनको language समझ नहीं आती है. And तो ये आप ये कह रही हैं कि मॉडल्स फॉरेनर थे इसलिए अच्छा हुआ? नहीं. Okay. वो शो ऑलरेडी एक बार हो चुका था यहाँ पे, और वो तब भी हिट था. बट यहाँ पे सेम सिचुएशन थी? आई मीन सेम सिचुएशन थी. बिल्कुल. ऑलराइट. ओके. सो हु इज योर रोल मॉडल इन दिस particular fashion field as in a show director angle? I would say Tanya, Appu and Anisha. I mean, preferred professionals. Okay. Because they are the ones whom I used to look up to then, because मैं उनका backstage करती थी and all, and जब मैं उनको काम करते हुए देखती थी, I always used to be in an awe कि wow, मतलब ये कितना अच्छा काम करते हैं. मतलब I have seen बहुत कोरियोग्राफर्स के वर्क. आई यूज्ड टू डू बैक स्टेज फॉर अदर कोरियोग्राफर्स आल्सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट दे ऑलवेज स्टूड आउट.
और जैसे वो रहते हैं अपनी टीम के साथ, जैसे वो सब कुछ अपना डील करते हैं. आई मीन दे आर एक्सट्रीमली प्रोफेशनल at their work, but when it comes to being humble or being nice to their team, they take full care of everyone around them. And that's what I think, again, passion and that honesty and humbleness comes together and makes a team. And then definitely I'm sure the show is going to be a hit. Okay. Because when your emotions are going into something, वो चीज़ hit होनी ही है, because आप उसमें सब कुछ अपना डाल देते, you put your soul in it. So that's what and from their work, the way they used to, I've always looked up to them. और मैंने हमेशा सीखा है उनसे कि कैसे क्या करना चाहिए, कैसे मतलब होना चाहिए, even if you're talking professionally. So yes, they are my gurus and they will remain my gurus always. Okay, so Aparna is always calm? Yes, mostly. She is mostly. Okay, so one more thing, I mean, before starting this show direction, this any other thing, see, show direction according to me is like leading something, a leadership quality. Correct. So anything you have done before this show direction? One memory I have is from my school. So there was this play जो हुआ था हमारे स्कूल में, ग्रीस कमानी ऑडिटोरियम में वो प्ले हुआ था 3 days के लिए. So we had an entire team. So I was assisting Poonam Chopra. She was a choreographer. Okay. एंड मैंने उनको असिस्ट किया था डांस कोरियोग्राफी वगैरह के लिए. एंड हमारी डायरेक्टर उस टाइम पे थी लिलेट डुबे, तो उनके अंडर हमने ये करा था. एंड वहीं से शायद मेरा एक फ्लेयर जागना शुरू हो गया था, बट देन अगेन इट वाज टुवर्ड्स डांसिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. बट आई डू सी अ कनेक्टिविटी बिटवीन द होल कोरियोग्राफी थिंग. जैसे हम यहाँ पे भी एक डिज़ाइन करते हैं, यहाँ पे भी एक आर्टिस्टिक मूवमेंट हम ड्रॉ करते हैं व्हेन हम डायरेक्टिंग अ शो की. एक लड़की यहाँ से आएगी, यहाँ से जाएगी, खड़ी होएगी यहाँ पे, ये भी एक पूरा स्ट्रक्चर देते हैं हम उस चीज़ को. एंड डांसिंग इज ऑल्सो लाइक दैट. अगेन इट्स एन आर्ट. सो मेरा फ्लेयर वहाँ से बहुत शुरू हुआ था अबाउट कोरियोग्राफी एंड थिंग्स, दो इट वाज डांस कोरियोग्राफी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट देन हाँ वहाँ से शुरू हुआ था. एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. There is so much similarity between both the things. Yes, there is. It's all your expression, body language, your attitude. I mean, I would like to add, पहले थोड़े सालों पहले, I would say 10-12 साल पहले शायद बॉलीवुड शोज का बहुत फ्लेयर चला था. जी जी. जब डांसिंग पूरी तरीके से आ गई तो मैं ही थी जो मैक्सिमम बॉलीवुड शोज वो करती थी, बिकॉज आई यूज्ड टू ट्रेन देम फॉर डांसिंग आल्सो. सो वी वुड पिक अप एराज फ्रॉम द 60s एंड गो अप टिल द 2000s. हर एरा के सॉन्ग्स पकड़ के उनको डांस करवाना, फिर मॉडल्स चलना उस पे. So it was a good amalgamation of dancing and choreography, and those were the shows which actually made my dream come true. मतलब जो सब अंदर था about dancing भी और choreography भी, वो shows जिनको करके ना वो अंदर से खुशी मिले. बिल्कुल बिल्कुल. आर्ट परफेक्ट. अच्छा, आपने बहुत सारे इंटरनेशनल शोज किए हैं, आई मीन बहुत ही सारे. What is the difference doing something outside of India and inside of India? Outside of India, I would say जैसे हम यहाँ पे, मैं इंडियंस के बारे में बोलूँगी, हम एक कोई भी फील्ड का बंदा हो, से इफ आई एम अ कोरियोग्राफर और XYZ इज अ बैक स्टेज मैन, वो सब कुछ हैंडल कर सकता है. एक बंदा सब कुछ कर सकता है, कोई भी क्राइसिस आए सब संभाल सकता है. आपको वो वहाँ नहीं मिलेगा. जो जो काम करता है वो वही करेगा, उससे ज़्यादा आपकी मदद नहीं कर पाएगा. दैट इज़ वन थिंग. एंड देन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, डिज़ाइनिंग एंड स्टफ लाइक दैट, आई थिंक वी आर मच बेटर हियर. Okay. And they are very basic, I would say. And in terms of creativity, अगर हम बहुत ज़्यादा करना चाहें तो इतना थोड़ा restricted है, I feel, वहाँ पे. Maybe it's their mindset and maybe they're okay with it and that's the way it works there. But as if I speak about it, being a creative person, I would want a little more. Okay. So that's just the difference that I feel and I notice. Otherwise, people, wonderful people. ट्रेडिशनल एंड एथनिक को थोड़ा छोड़ दें, अदरवाइज हर किसी का माइंडसेट यूरोप को बीट करने का है. ऐसा लगता है, बहुत बार तो लगता है, किसी का नाम लिए बगैर हम बोलेंगे कि वो जो किसी ने एक शो किया इटली में या फ्रांस में कहीं, उसने जो कलेक्शन वहाँ लॉन्च किया था वो 2 महीने बाद यहाँ देखने को मिलता है. तो ये लोग ज़्यादा इंस्पायर दिखते हैं फॉरेन से.
Yes, because I would say why the reason is one is very technical that fashion पहले accept हमारा वहाँ होता है यूरोप में और उसके बाद accept I mean it's a sad truth that पहले हमारा फैशन बाहर एक्सेप्ट होता है उसको एक वैलिडिटी मिलती है और उसके बाद हम सब फॉलो करने लगते हैं ओहो ये फैशन आ गया है सो दे वुड लाइक टू मेक अ मार्क देयर फर्स्ट and then bring it here probably I mean I'm not sure this is my thought process मैं ये बोलना चाहूँगी and buyers I feel the buying power and the understanding of buying is more for them there rather than here agreed so I feel these are the two reasons that I would think there's one more thing जो शायद हमको कभी पसंद नहीं आती बट आई कैन नॉट कंट्रोल एनीबडी बाहर कंट्री जितने भी हैं वहाँ पे सेलिब्रिटी जो है वो आपके फैशन के लोग ही सेलिब्रिटी हैं शो स्टॉपर कोई मॉडल ही है वैसे कॉन्सेप्ट वहाँ बहुत होता नहीं है ऐसा डिज़ाइनर और मॉडल वही इंपॉर्टेंट है वो किसी भी हॉलीवुड के एक्ट्रेस को एक्टर को ला के नहीं रखते हैं वहाँ पे यहाँ पे जो कल्चर है ऐसे नहीं लगता ये जो माइंडसेट है अभी लोगों का बॉलीवुड ये फैशन को बहुत पीछे नहीं ले जा रहा है ऐसा नहीं लगता आपको बिल्कुल ले जा रहा है बिल्कुल ले जा रहा है आप मतलब जब देखो क्लोजर ऑफ द शो इज डन बाय मोस्टली सेलिब्रिटी फ्रॉम बॉलीवुड आई मीन आई ऑनेस्टली फील जब मेरी मॉडल्स चल रही होती है मुझे तो लगता है वो एक एक सेलिब्रिटी है मेरे लिए बिकॉज यू नो दे आर एंड दे आर मॉडल्स बिकॉज दे हैव द बॉडी एंड द पर्सोना टू कैरी इट अब हर बॉलीवुड एक्ट्रेस के पास सेम बॉडी नहीं है बट अब फिर भी उनको पिना के मीडिया के आगे खड़ा करते हो बिकॉज दी अंडरस्टैंडिंग आई मे से और द वे इट सेल्स इज दिस ओनली यहाँ पे कि एक बॉलीवुड एक्ट्रेस ने कपड़े वो पहन लिए तो वो ज़्यादा बेहतर हो गए अब वो माइंडसेट ही कह सकती हूँ मैं और तो कुछ है नहीं आई मीन टू मी मुझे अगर कपड़ा कोई खरीदना मैं एक मॉडल पे देखना प्रेफर करूँगी बिकॉज यू नो दैट इज़ द राइट वे शी इज़ द राइट पर्सन आइडियल पर्सन टू कैरी इट ऑफ एंड नॉट अ बॉलीवुड एक्ट्रेस राइट I mean, इसकी contradiction भी हो सकती है because you know they some designers might say that masses ने पहनना है और masses की body models जैसे नहीं होती है फिर तो models का कोई काम ही नहीं है I feel I mean it's totally है ना it's not right it's like doing that stepmotherly treatment to your own team yes but anyways like they thought we cannot say anything I mean, about it it's each to its own there is no right or wrong in this industry I would say. Okay, tell us about your team, like music director, backstage. So my favorites are Anjali Singhal in backstage management. I've also worked a lot with Poojan. She's also my favorite. I love her also. Then we have for music, I usually use Kailash Munjal, known as Kamal mostly. And for light, Lloyd. And there is nothing favoritism in or liking in that particular makeup and hair. Kazi. Depend on the shows. Kazi is my favorite. But you know, I mean, I would say I've been very open to work with all. I have mostly worked with everyone, and I am not a person who would like to answer a favorite. Because again, coming back to the same thing, everyone works hard. Everyone is best at their job. That's why they are in the field. But I would like to ask about your favorite designer or designers. Shantanu and Nikhil are my favorite designers, and I have not recently, just before COVID, I worked with Ashish Soni. Okay. And I like him because of his work, his whatever clothes that he makes and all of that, but as a person, he's such a gem, and plus the kind of mentoring that he does for people is amazing. I mean, he's bringing in people to design and be such good designers. It's amazing to watch. Again, a person with a soul really attracts me. I mean, in my opinion, a person with a soul, whether be a designer, whether be a backstage manager, whoever it is, if he has a soul, is my favorite. Okay, so you prefer a good human rather than being a good artist? I prefer being a good human. Oh, nice. So you converted into good experience. Yes. Most of them have been एक बहुत ना controversial subject है जो मोस्टली सारे मॉडल्स का कहना होता है बैक स्टेज वालों के भी कहना होता है
कि हमारा जो शो डायरेक्टर है वो चीखता बहुत है। तो आपको देख के ऐसा लग नहीं रहा है, बट ये सबकी कंप्लेन, ऐसा क्यों है? देखो मैं नहीं चीखती, आई एम वेरी काम, Okay. आई ट्राई टू बी द कामेस्ट बिकॉज यू नो आई अंडरस्टैंड एवरीवन इज डूइंग दैट जॉब, everyone has a capacity in their brain to understand. My shouting, my screaming is not going to get them to do anything better. इससे अच्छा मुझे लगता है अगर मैं प्यार से बात करूं या अंडरस्टैंडिंग होके बात करूं तो उनको ज़्यादा समझ में आएगा और वो मेरे लिए करेंगे भी. एंड दिस इज समथिंग दैट आई ऑनेस्टली हैव नेवर डेल्ट विद, दैट मुझे किसी से प्रॉब्लम हुई हो अनलेस एंड अनटिल समथिंग कुछ बहुत ही यू नो ऐसा हुआ हो जो हैंडल ही नहीं हो पा रहा हो. बट मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है. मैं कहूँगी कि मैं बहुत चीखती थी इनिशियल डेज में. मैं आई रिमेंबर मैं 2-3 शोज़ में बहुत चीख पड़ी थी, बट वो मुझे नहीं लगता सामने वाले की गलती थी, वो मेरी खुद की गलती थी. बिकॉज आई वॉज गेटिंग हाइपर कि मुझे काम ख़त्म करना है एंड किसी को समझ में नहीं आ रहा है और मुझे बार बार बोलना पड़ रहा है. दैट वॉज माई प्रॉब्लम, दैट वॉज नॉट दैट I प्रॉब्लम. mean, it's so great. I mean, somebody saying this line, it's like, it's very different. I thought this, you know, that burden or some anger comes with that title, show director. No, I mean, I would not like to believe that कि वो आपको कोई अथॉरिटी देता है एंग्री होने के लिए किसी के ऊपर. नहीं, आपके पास इतनी पावर नहीं है कि आप किसी के अननेसेसरीली, तो आप बिल्कुल किसी पे एंग्री नहीं हो सकते. क्यों हो गया आप? अच्छा आप बताइए, अपने पुराने शोज़ देखते हो आप? देखती हूँ, अभी भी देखती हूँ. तो क्या क्या कमियां थी उनमें? हर शो में उसकी अपनी एक ब्यूटी थी और एक अपने ही किस्म के फ्लॉज थे जिन पे मैं इसलिए भी देखती हूँ ताकि मैं उन्हें बेटर कर पाऊँ, और मैंने बेटर किया भी है. बट जो अगला करती हूँ उसमें भी जब दोबारा देखती हूँ तो एक ब्यूटी दिखती है, एक फ्लॉ दिखता है, मतलब हमेशा. सो दिस इज जस्ट फॉर मी टू इम्प्रूव माई सेल्फ. मैं उन पर वापस जाती हूँ. ऑब्वियसली मेरी मेमोरीज तो हैं और कई बार मैं खुद देख के भी हैरान हो जाती हूँ, अच्छा ये मैंने किया हुआ है. कई शोज ऐसे निकल भी आते हैं जहाँ मुझे लगता है ओ वाओ ये मैंने किया वो है. सबसे फनी वाला बताइए आप, जो आपको हमेशा हंसाता है. वो एक शो था जिसमें मेरी एक मॉडल ट्रिप हो गई थी, और दो इट वाजंट अ फनी मोमेंट फॉर मी, बट द वे शी हैंडल्ड इट, शी गॉट अप and very gracefully started walking back again. And one on that same show was a malfunction. Oh. The funny part of that was that I was screaming. I mean, I'm not contradicting. I wasn't screaming at a model. नहीं इसको नहीं, मत लो, I इसको was मत not लो. screaming at a model. But मैं क्लियर कॉम पे बोल रही थी जोर जोर से कि नहीं, उस मॉडल को दो- हटाओ ये- हटाओ ये- वहाँ ये- से. ये दोनों वो हो चुका है. नहीं, मैं मॉडल पे नहीं चीखी बिल्कुल भी. मैं क्लियर कॉम पे अपनी मैनेजमेंट टीम को कर रही थी कि मॉडल को हटाओ वहाँ से. So that was really funny, and the way I was doing it was very funny. I was funny. That moment it was a crisis. Now it's like it's become a funnier moment after that. Yes, obviously. of course, yes. क्या आप बाद में जब सोचते हो तो फिर लगता है अच्छा ये भी हुआ था. Yes, of course. तो आप अपने शोज़ जब वापस देखते हो तो आपने बोला है कि उसमें अच्छे और बुरे दोनों पार्ट्स देखने को मिलते हैं. पुराने शोज़ और क्वालिटी, not only that camera quality, digital quality, or otherwise, the kind of production and those things, it has changed a lot, It has. right? So I mean, you prefer to play more with the props rather than just walk or music? I like playing with props. I have used a lot of props in a couple of my shows, and which have turned out very beautiful. I feel it adds a lot of drama to your whole sequence. It brings a scene alive. एक scene बन जाता है वो. जी जी. बट हम जैसे अपने फैशन वीक्स या वो सब देखते हैं उसमें आप देखते हो कि मतलब यू नो इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट्स नॉट समथिंग लाइक दैट. बट आई लव डूइंग दोस टाइप ऑफ कमर्शियल शोज जहाँ पे मैं पूरा मतलब एटलीस्ट मेरी ओपनिंग और क्लोजिंग मुझे वैसे चाहिए होती है, बिकॉज आई फील द ओपनिंग इज द बिट विच लीव्स द मोस्ट इम्पैक्ट. तो मुझे होता है उसमें प्रॉपर लाइटिंग हो, ड्रामेटिक लाइटिंग हो, आपकी प्रॉप्स पड़े हों, मॉडल्स इधर उधर से निकल के आ रही हों, कुछ बैठी हों, वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं. I mean, आपके बात करते करते आपका शो डायरेक्टर बाहर आ रहा है. शायद मैंने कहा ना मैं बह जाती हूँ. मुझे स्टेज पे भी नहीं पता चलता. So your biggest mistake in your entire career? I have not done any so far.
ओके, सीधे भगवान से बात कर रहे हैं हम. नहीं, you mean in the profession? I जी, mean जी, in जी, my जी. shows. Your entire journey, your career. Um, Maybe a couple of choices of my shows that I made. I shouldn't have probably done them. They were hasty decisions कि चलो ये कर लेना चाहिए. But again, I would say, you know, when you start talking to a client and you are discussing a show, the show is very big when we are talking. But eventually it starts deteriorating, and you know, you are connecting with the property or the show or the person because you feel that, you know, Agreed, yes. you are visualizing something. But when that vision doesn't turn out to be that you did visualize, and it doesn't even satisfy you as a choreographer or a director that ye maine kiya, I mean, I'll put my hard work at the best, but you know, there is a lot that goes into it, not just True, my true. choreography Yes, or yes, my yes. direction. So when the team is not going hand in hand, and if I'm not getting ample support to bring the vision out, then yes, I felt those were a couple of decisions that I did make wrong, and it affected my career. So, I mean, is your mistake or regret? It's a regret, not mistake. I wouldn't call it my mistake. I mean, I wouldn't call any of my shows a mistake because I've put in my best. So, but yeah, it was a regret because it did impact my career. It was talked about कि वो शो अच्छा नहीं हुआ था. And पता क्या होता है, बिल सब फाड़ते किस पे हैं? शो डायरेक्टर पे. So it becomes your entire fault. It doesn't Absolutely, go beyond absolutely. you. चाहे वो क्लाइंट हो या डिज़ाइनर हो या ऑडियंस भी या हो. ऑडियंस भी हो. हाँ, तो My आपकी opinion आपकी is not. फेवरेट मॉडल्स कौन कौन सी हैं? अब यू नो वेरिएशंस हो चुके. उस टाइम पे कोई और थे. हाँ, अब ऐसे कोई है. बताइए वेरिएशन के अकॉर्डिंग. Like on times में I used to love Jessie Randhawa was my favorite at that time when I did shows as a backstage manager. She was my top. Then I had Bhavna Sharma. Then she became like, I really used to like her. And then eventually अब आप देखो तो Krishna Somani, I really like her. And yeah, Sonalika Sahai, Lakshmi Rana has been my favorite. And somebody in new generation? New generation, I would say maybe. I should say next generation, not new. Next generation, I still don't have a favorite name. I still don't have one. Okay. Okay. Maybe I'm looking for the right face or the right person to. You know, it's just not the face and the beauty of the model that attracts me. I have a typical thing in my mind for being a model. For me, a model is whom you should be able to look up to. So there is any show like हम सबका होता है ना एक ड्रीम प्रोजेक्ट. देयर इज एनीथिंग व्हिच समथिंग यू वांट टू डू इन फ्यूचर और मे बी यू थिंकिंग अबाउट कि एक ऐसा शो करना है, इस तरीके का सेटअप हो या कुछ भी ऐसा कुछ एक वो ड्रीम प्रोजेक्ट है आपका? There was a Victoria's Secret show that I saw on FTV once, and that has just sat down in my brain somewhere because the set of it was so beautiful and colorful. I mean, it was beyond the whole, like we call it as a backdrop here. So their setup was all windows, and there were different windows, people coming out from different, you know, windows, doors, and it had so much going on into it that it was just beautiful. And that is something. But agar, you know, in today's time, it is some. I feel it is very difficult to reach because I need a sponsor who can actually nearly sponsor a film to film. To make that one set. Right. So yeah, that and the topmost possible models. In fact, all the models that I love should be on that show, and the designers that I love should be on the show. So to me, a dream project is an amalgamation of people whom I love to be, and I not just love, people who are worthy to be in this industry and have proved themselves over and over again should be in that show, and it should be a team of just perfect people. Wow. To give that perfect show. It's good. It's very interesting. Yeah, it is my dream. So there is any message or some guidance you want to give to your upcoming, not only models, otherwise somebody who wants to come in the field of fashion, be it is show director or backstage manager or model, anybody?
So the guidance I would like to give is that never give up. This industry will pull you down. It'll throw you up, bring you down. I mean, you'll see all phases of life. You will learn a lot, and every day will be a new day with a new person to deal with. And you should just have your head on your shoulders and keep going. Just never give up. Be patient, and be calm. Be calm. Perfect. Anything you want to say about our project Show Directors Night? I would just like to say that I'm extremely thankful and grateful for this opportunity to come out and speak about my passion. No one ever has done this, and I would like to say from the first mail that I got from the office, Ji. it made me so emotional that there is someone who actually acknowledges behind the scenes, and so well put. And I've been, I am a woman, I'm a wife, I'm a mother, but there is one thing that completes me, and that is being a show director as a person. Fantastic. So that is what I would like to say, and I want to thank you.